Hello students, we are back with a new chapter of your NCERT textbook, that is chapter number 15, probability. This chapter you had already studied in your 9th standard, right? Same to same chapter is coming there in the 10th standard, just there is a difference that in 10th standard there are 2 or 3 sums, right, which are different from 9th standard. 2 और 3 सम ऐसे नए टाइप के हैं जो आपने कभी 9th स्टैंडर्ड में पढ़े नहीं है, बस इतना सा ही डिफरेंस है. ओके, सो आपको 9th स्टैंडर्ड का प्रोबेबिलिटी मालूम है, देन हियर इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? ओके, सो द सेम फॉर्मूला as we had studied in the 9th standard. So let us start with the first of all the introduction part of our chapter. Based on this introduction part, there is some theoretical question which we are going to discuss after completing this theory. Okay, so here we are going to start first of all the probability formula. Probability की जो formula है उससे हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर, राइट? सो formula for probability is as follows. Same formula which we had already studied in 9th standard. Let us see that what is the formula. Probability of any event, right? You can also write here capital A, B, C, D, whatever the letters you like. Okay, so probability of any event is given by the formula number of favorable outcomes divided by total number of possible outcomes. In the entire chapter I am going to use this formula. Right? Favorable outcomes कितने हैं? That we will write in the numerator, and total possible outcomes, that number we will write in the denominator. थोड़ा बहुत तो 9th standard का याद आ चुका होगा. Okay. Now again one theory is there which is different from 9th standard. It means for 9th standard में ये जो portion है वो नहीं आया था, तो चलो देख लेते हैं 10th में क्या नया है. Suppose a die is thrown or a coin is tossed. आप एक डाई को थ्रो करते हो तो how many outcomes are possible? उसमें से कितने outcomes possible है? 6, right? Okay, which are that 6 outcomes? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. Or a coin is tossed. आप एक coin जो है उसको toss करते हो, then उसमें कितने outcomes possible है? 2, either head or tail. Then the outcomes occurring from it means ये डाई में से और ये कॉइन में से, दोनों में से जो आउटकम हमें मिल रहे हैं आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. वो इक्वली लाइकली है. इसका मीनिंग हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है, हर एक के जो चांसेस है, डाई हमने थ्रो किया, राइट? तो देयर आर टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6. तो 6 में से कोई भी एक नंबर के आने के चांसेस जो है वो इक्वल है. इट मींस 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है. These 6 outcomes have equal chance. सभी के चांस जो है वो इक्वल है. In the same way, if we throw a coin, right? 2 possible outcomes can come, head or tail. We cannot say that only head will come or only tail will come. दोनों के चांसेस क्या है? इक्वल. इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? Are equally likely outcomes. It means कुछ भी आ सकता है. We cannot say that this only will come. Okay. अब आगे क्या लिखा है वो आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये equally likely outcomes का actual meaning है क्या. But suppose that a bag contains 4 red balls and 1 blue ball. एक बॉल के अंदर 4 रेड बॉल है और एक जो है वो ब्लू बॉल है. ओके, एंड यू ड्रॉ ए बॉल विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. अब आपको बैग के अंदर देखना नहीं और बैग में से कोई भी एक बॉल निकालना है. Then the outcomes here are not equally likely. यहाँ पर जो आउटकम्स हमें दिए हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है. Why? Because
रेड के निकलने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज देयर आर 4 रेड बॉल्स, 4 रेड बॉल्स और सिर्फ एक ही ब्लू बॉल है। then we cannot say that the outcomes are equally likely. Why? अब बैग में से बॉल निकालोगे तो रेड के चांसेस ज्यादा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सिंपल बात है ना। तो अब समझ में आया इक्वली लाइकली और नॉट इक्वली लाइकली में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने बोला था कि इक्वली लाइकली और यहाँ पर मैंने बोला नॉट इक्वली लाइकली। तो अब आपको समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वली लाइकली एंड नॉट इक्वली लाइकली। आया समझ में? ओके, इसके ऊपर भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, सो ध्यान से ये पढ़ लेना बाद में एक और बार, और समझ में आया हो तो फिर से एक बार रिमाइंड करके ये जो पूरा पैराग्राफ मैंने आपको समझाया है वो समझ लेना। ओके, एन इवेंट हैविंग नेक्स्ट टॉपिक, an event having only one outcome of an experiment is called an elementary event. सिर्फ एक ही आउटकम है, it means it is known as an elementary event. Suppose we are tossing a coin, तो head कितनी बार आएगा, 1 टाइम, tail कितनी बार आएगा, 1 टाइम। In the same way die में भी 1 कितने पॉसिबल आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो उसमें से 1 कितनी बार आएगा, ऑब्वियसली 1 टाइम। 2 कितनी बार आएगा, वो भी 1 टाइम। 3 कितनी बार आएगा, वो भी एक बार ही है। अंडरस्टूड? लाइक दिस देयर इज एन इवेंट एंड इट इज हैविंग ओनली वन आउटकम, सिर्फ एक ही आउटकम पॉसिबल है, देन दैट टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट्स। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली, so you are not supposed to worry, you are not supposed to worry about it, right? आपको बोलेंगे कि भाई एलिमेंट्री इवेंट का हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट इट वाज फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली। नेक्स्ट, the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is always 1. Now based on this line, there is one filling the blanks in your NCERT textbook exercise 15.1. So pay attention one more time. The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is always 1. कोई भी एक्सपेरिमेंट हो उसमें कितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स हो, एक एक्सपेरिमेंट है राइट, उसमें मान लो कि भाई 6 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। डाइस वाला एक्सपेरिमेंट 1 आने के चांसेस क्या है, 1/6 राइट। फेवरेबल आउटकम्स 1 एक बार आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6। 2 आने के चांसेस क्या है, वो भी 1/6। 3 आने के चांसेस वो भी 1/6। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स है आप सबका एडिशन करो तो हमेशा आंसर जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। हर बार आंसर आपको क्या आएगा, 1 ही आएगा। कंडीशन अप्लाई, आपको उसका सम करना है। दिस इज आल्सो फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वन फिलिंग द ब्लैंक्स is there in your NCERT textbook. Okay, so write this much theory in your book, then afterwards we will start this much. Okay, ये जो है हम बाद में कंप्लीट करेंगे। पहले जो ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिखवाया है वो आप अपनी नोटबुक में लिख लो। ओके, okay students, so written this part again, this last line one more time, let us revise it. The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment, एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सबका आप एडिशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ओके, दैट वी विल सी इन द सम्स। जब हम सम करेंगे तब जो है ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ओके,
right now remember that the answer is 1. आपको सिर्फ याद रखना है कि भाई एलिमेंट्री इवेंट्स का एडिशन करोगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा. ओके, नेक्स्ट थिंग, बेस्ड ऑन दिस ओनली इट इज रिटन हियर. अब मान लो कि एक जो है वो एक्सपेरिमेंट है. ओके, दैट एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ जाएगा इसलिए मैं ओरली आपको बोलता हूँ. राइट, कॉइन है, आप कॉइन को टॉस करोगे तो either head will come or tail will come. It means total number of possible outcomes कितने होंगे 2. Okay, now what is the probability that you will get head? Head आएगी तो उसकी probability क्या होगी? P of H. Suppose here I am writing P of H. Head की probability क्या होगी? Favorable outcome. Head एक बार आ सकता है out of 2 possible outcomes. So head की probability क्या होगी? 1/2. In the same way, what will be the probability of tail? Tail की probability क्या होगी? That will be also 1/2, right? Okay. अब हो गया, आपके ये लाइन प्रूव हो गई. दोनों का एडिशन करो, पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया ना. कॉइन में तो दो ही आउटकम आ सकते हैं, आइदर हेड और टेल. दोनों का एडिशन करो, हाफ प्लस हाफ क्या आ गया 1. तो ये लाइन भी हमको समझ में आ गई. This thing we will ये भी जो यहाँ पे सब कुछ लिखा है वो भी जो है वो आपको इसमें से ही समझ में आ जाएगा. P of E, मान लो कि P of E means कोई इवेंट है, राइट? और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है P of not E, इट मींस हमें वो नहीं चाहिए. एक इवेंट है, सपोज दिस इज योर इवेंट ऑफ हेड. एक इवेंट हेड की है और दूसरी इवेंट जो है वो उसका मीनिंग क्या है? हेड नहीं चाहिए. नॉट E मींस ई नहीं चाहिए. ई में हमने क्या सपोज किया था? हेड सपोज किया था. समझ में आ रहा है? एक इवेंट है, मान लो कि सपोज आपको कॉइन टॉस कर रहे हो, उसमें से आपको हेड चाहिए. तो हेड की व्हाट विल बी द आंसर ऑफ हेड? 1/2, राइट? नाउ देयर इज अ सेकंड इवेंट, वी विल कंसीडर इट एज नॉट ई. नॉट ई मींस हेड नहीं चाहिए. हेड नहीं चाहिए. ओके, ऐसे भी कोई इवेंट है, सपोज एक एक्सपेरिमेंट में सिर्फ दो ही इवेंट है. एक ये कॉइन वाला ही एग्जांपल आप ले लो, एक में हेड चाहिए, दूसरे में हेड नहीं चाहिए. तो ऐसा कोई भी सम हो, उसमें आप एडिशन करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1. अगेन सेम दिस एग्जांपल, हेड चाहिए या तो हेड नहीं चाहिए. हेड नहीं चाहिए तो इट मींस उसका मीनिंग क्या हुआ? वी वांट टेल. तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ. हाफ प्लस हाफ, आंसर क्या आएगा? 1. अंडरस्टूड? आया समझ में? दिस इज जस्ट एन इक्वेशन, सो यू आर नॉट सपोज्ड टू वरी. हाँ, वो बात है कि भाई बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, ये और ये इक्वेशन में से देयर आर 2 to 3 सम्स इन योर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल, based on this equation, there are 2 or 3 sums. Okay, that when we will do exercise, you will be able to see that. So that's why I am telling you that you have to remember this equation. Equation में कुछ नहीं है, P of E plus P of probability of not E is equals to 1. Now here we will not write not E. हम not E को कैसे represent करेंगे? E के ऊपर एक लाइन करके. We can also say it as E bar, or you can also read it as not E. इसको आप not E भी बोल सकते हो या तो फिर E bar भी बोल सकते हो. ओके, दोनों का एडिशन करोगे आंसर क्या आएगा? 1. In general, it is true that for an event E, कोई भी इवेंट E है और आपको P of E bar चाहिए, तो आप उसका आंसर कैसे फाइंड करोगे? 1 minus P of E. This is simple equation. ये P of E पॉजिटिव है, if it goes to the right hand side then obviously it will become negative and it will be subtracted from 1. 1 will stay as it is on right hand side. This will go to the right hand side and it will be subtracted. Understood? Now next thing, based on this only, the event E bar is called the कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई. ये जो इवेंट ई बार है उसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट ई का कॉम्प्लीमेंट है,
रिवर्स है। कॉइन है तो उसमें दो चीज है, हेड एंड टेल। सपोज कंसीडर द डायरेक्शन ईस्ट, देन उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वेस्ट, नॉर्थ देन साउथ। आया समझ में? ओके, like this E bar is called the complement of the event E. This was just only for information. Therefore, we can say that E and E bar are complementary events. एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है, एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है। If we talk in our mathematics language, then one is head and other is tail. आया समझ में? ओके, नेक्स्ट न्यू टॉपिक, राइट? नाउ दिस इज अगेन important for you. From this, filling the blanks are there in your exercise. The probability of an event which is impossible to occur is 0. ऐसी कोई इवेंट है जो impossible to occur, वो हो ही नहीं सकती, और उसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, then 110% उसका आंसर क्या आएगा, 0. Such an event is called an impossible event. वैसी इवेंट को हम क्या बोलेंगे, impossible event. For an example, here it is written that sun rises in the west. सन जो है वो कहां पर राइज करता है, वेस्ट में। ये बात सही है? Wrong. Sun will never rise in the west. Sun will rise in the east. अब ये जो इवेंट है सन राइजेस इन द वेस्ट, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। इट मींस like these events are called impossible events. Okay, the same thing I think you had learned in your 9th standard. Again, let us see the next thing. The probability of an event which is sure, और ब्रैकेट में लिखा है, और certain to occur is 1. ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है वो ही होने वाली है, उसके अलावा कुछ भी हो नहीं सकता। ऐसी कोई इवेंट है और उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, देन 110% उसका आंसर क्या आएगा, 1. ओके, सच एन इवेंट इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। वैसी इवेंट को हम क्या बोलेंगे, आइदर श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहाँ पे राइज होता है, ईस्ट में। तो भाई सही बात है, एट एवरी डे राइट सन विल राइज इन द ईस्ट ओनली, सो दिस इज सर्टेन टू हैपन, ये होने वाला ही है। अंडरस्टूड? सो लाइक दिस इवेंट्स आर कॉल्ड आइदर श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। दोनों में से आप एग्जाम में कोई भी एक ही लिखना है। ओके, और उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा क्या आएगा, 1. I think this also you had learned in your 9th standard. So our theory portion is completed. Still one small point is remaining. Due to the space problem, I have not written here. First of all, you complete this part, because this part you had already completed, right? So now complete this part. Then we will see our then we will start our exercise 15.1. राइट, 15.1 जो है वो हम एक्सरसाइज आज शुरू करने वाले हैं। बिफोर दैट कंप्लीट दिस थियरी इन योर फेयर बुक। ओके, okay student, from here I had rubbed down the formula for probability, right? यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला लिखी थी वो मैंने रब कर दिया, और मैंने पहले बोला था कि एक छोटा सा टॉपिक जो है वो थियरी में रह गया है, that I had written here, and I had also ended the theory portion. And today we are going to complete the first 4 main questions of our exercise 15.1. ओके, इसके बाद हम एक्सरसाइज 15.1 शुरू करने वाले हैं।
So before that, let us complete this topic. What is written here? The condition for an answer of probability is. प्रोबेबिलिटी के आंसर हम ये चैप्टर में फाइंड करने वाले हैं, राइट? तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी? द आंसर विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1, where 0 is also possible and 1 is also possible. इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 0 is less than or equals to probability of an event E is less than or equals to 1. It means probability of कोई भी इवेंट E है, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. 0 से ज्यादा हो सकती है प्रोबेबिलिटी और 0 भी हो सकती है. ज्यादा क्यों? बिकॉज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में इस साइड जो है वो क्या ओपन है, राइट? ओपन वाला पार्ट क्या होता है? ज्यादा होता है. हमने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ लिया, राइट? और यहाँ पे क्लोज है, इट मींस दिस इज स्मॉल, राइट? So probability of any event is greater than or equals to 0 and probability of any event is less than or equals to 1. It means हर बार हमेशा probability का आंसर जो है वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, where 0 is also possible and 1 is also possible. If our answer is 0, we know that it is an impossible event, and if our answer is 1, then it is a sure or certain event. Okay, understood this topic? Now the first two questions only. Exercise 15.1 के first question और second question जो है वो हम orally discuss करेंगे, because उसकी theory यहाँ पे already लिखी हुई है. Whatever is written on the board, from it only question number 1 and 2 is there. So first of all we will discuss it orally. आप आंसर्स जो है वो वहां पे टेक्स्ट बुक में लिख डालो. From question number 3 we are going to do the entire exercise on board only. Question number 3 से हम क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिखेंगे और उसका आंसर भी बोर्ड पे लिखेंगे. समझ में आई बात? Question number 1 and 2 we are going to discuss orally. So let us start our exercise 15.1. Question number 1. In that filling the blanks is there. I am having textbook with me. Let us read that what is given to us. Complete the following statements. First one, probability of an event E plus probability of event not E is equals to dash. बोर्ड पे लिखा है कि नहीं लिखा है? Yes. Probability of event E plus probability of event not E is always equals to 1. So first filling the blanks में आपका क्या आंसर आएगा? 1. आया समझ में? Okay. Second one. The probability of an event that cannot happen is dash. क्या आएगा आंसर? मैंने बोल दिया. क्या आएगा? 0. जो प्रोबेबिलिटी होने ही वाली नहीं है, सॉरी जो इवेंट जो है वो होने ही वाली नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा? 0. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हिच इज इम्पॉसिबल टू ऑकर इज 0. अब आगे ही दूसरी ब्लैंक है सेकंड क्वेश्चन में. सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश. उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? डैश. तो सेकंड ब्लैंक में हमारा क्या आंसर आएगा? सच एन इवेंट इज कॉल्ड impossible event. Understood? आ रहा है समझ में? Okay. Next आगे बढ़े थर्ड क्वेश्चन में. Okay. So let us start our third question. The probability of an event that is certain to happen is dash. वो होने ही वाली है 110% होने ही वाली है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा ना? ओके. थर्ड में ही दूसरी ब्लैंक है. सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश. उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? सच एन इवेंट इज कॉल्ड ए श्योर और सर्टेन इवेंट. आपको दोनों लिखना है तो आप दोनों लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक लिखना है तो एक लिख सकते हो. है समझ में? थर्ड वन कंप्लीटेड. नाउ लेट अस स्टार्ट फोर्थ वन. The sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is dash.
फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is dash. The sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is dash. क्या है आंसर? 1. Okay. Next one. Fifth, fill in the blanks. The probability of an event is greater than or equals to dash. Probability किससे ज्यादा हो सकती है? Probability can be more than 0. फिफ्थ में भी दो ब्लैंक्स है, तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? 0. अगेन वन मोर टाइम. फिफ्थ ब्लैंक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. फर्स्ट ब्लैंक में 0 आएगा एंड लेस देन और इक्वल्स टू, इट मींस प्रोबेबिलिटी का आंसर किससे कम आएगा? ऑब्वियसली 1 से कम आएगा. अंडरस्टूड? फिफ्थ में देयर आर टू ब्लैंक्स. फर्स्ट में आंसर 0, सेकंड में 1. ओके. सेकंड क्वेश्चन, पे अटेंशन and it is advisable to you that take out your textbook and see the questions there. Second one, second main question, which of the following experiments have equally likely outcomes? Equally likely outcomes इनमें से किसके एक्सपेरिमेंट्स के हैं? एक्सप्लेन, हमें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना है. Simply we have to say that this experiment have equally likely outcomes or not. Okay. First है, एक driver attempts to start a car. एक कार का ड्राइवर है, वो कार शुरू करने की कोशिश कर रहा है. The car starts or does not start. कार स्टार्ट होगी या तो कार स्टार्ट नहीं होगी. ओके, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो इक्वली लाइकली है कि नहीं है? And the answer is it is not equally likely. Why? Because कार जनरली क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी. दोनों के चांसेस इक्वल नहीं है. कार शुरू होने के चांसेस ज्यादा है. राइट? हमारा मेजॉरिटी सबके पास कार है. हम हर एक बार जो है वो कार को शुरू करते हैं. मेजॉरिटी टाइम इट स्टार्ट्स. कार कब शुरू हो नहीं सकती? When there is some problem in it. तभी कार शुरू नहीं होगी. सो कार शुरू होने के और कार नहीं शुरू होने के इक्वल चांसेस नहीं है. इट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको दिया है उसमें आपको आंसर क्या लिखना है? यू हैव टू राइट ए आंसर दैट दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स. सिंपल. कोई एक्सपेरिमेंट में इक्वली लाइकली आउटकम्स है तो आपको उसमें यस लिखना है, इधर आपको नो लिखना है. ओके. सेकंड वन, a player attempt to shoot a basketball. He or she shoots or misses the shot. एक बास्केटबॉल का प्लेयर है, राइट? वो जो है वो शूट करता है, बॉय हो या गर्ल हो. he or she shoots or misses the shot. तो वो शॉट को क्या करेगा? मिस करेगा या तो शॉट करेगा. तो दोनों के चांसेस इक्वल है कि नहीं है? नो. राइट? व्हाई? मेजॉरिटी टाइम्स a player will shoot the ball. Let us consider an example of cricket. क्रिकेट खेल रहे हैं, राइट? तो बॉल हमारे पास आता है, तो बॉल को हम शूट करते हैं. इट मींस बैट में हम टच करते हैं या तो फिर उसको छोड़ देते हैं. तो दोनों के चांसेस इक्वल है. वी नो ओनली इन एन ओवर 6 टाइम्स बॉलर विल थ्रो ए बॉल, राइट? एक ओवर में 6 टाइम्स बॉलर जो है वो बॉल को थ्रो करेगा. तो क्या ऐसा होगा हम हर एक ओवर में 3 बार हिट करेंगे और 3 बार बॉल को मिस कर देंगे? ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे. राइट? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी बास्केटबॉल में भी वही सिचुएशन होगी. बॉय हो या गर्ल हो, मेजॉरिटी टाइम्स इट विल शॉट द बॉल. शॉट मींस उसका जो बास्केटबॉल का जो है वो उससे बॉल को टच करेगा, राइट? और समटाइम्स इट विल हैपन दैट इट विल मिस द बॉल. तो शॉट करने की और मिस करने के इक्वली आउटकम्स नहीं है.
So here also you have to write that this experiment does not have equally likely outcomes. Understood? Second में अब third one. A trial is made to answer a true or false question. The answer is right or wrong. Right? A trial is made to answer a true or false question. एक हम ट्राई करते हैं कि भाई मान लो कि कोई भी स्टेटमेंट हमें दिया है, हमें मालूम ही नहीं है कि ये स्टेटमेंट का आंसर क्या आता है, ट्रू भी आ सकता है और फॉल्स भी आ सकता है, राइट? देन योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। इट मींस एक स्टेटमेंट आपको दिया है, अब ये स्टेटमेंट आपको मालूम ही नहीं है, यू आर नॉट हैविंग आइडिया अबाउट दिस स्टेटमेंट एंड यू आर सपोज्ड टू गिव एन आंसर आइदर द स्टेटमेंट इज अ ट्रू और फॉल्स, देन योर आंसर मे बी राइट और रॉन्ग। तो अब ये जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली है कि नहीं है? यस। व्हाई? बिकॉज हमें ये स्टेटमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वी आर नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट दिस स्टेटमेंट। तो हम लोग आइदर ट्रू बोलेंगे या आइदर फॉल्स बोलेंगे। तो राइट और रॉन्ग होने के चांसेस क्या है? इक्वल है। राइट और रॉन्ग होने के चांसेस क्या है? एग्जैक्टली इक्वल है। Why? Because हमें ये स्टेटमेंट नहीं मालूम है इसलिए। ओके, अंडरस्टूड? तो थर्ड में आपका आंसर क्या आएगा? यस, दिस एक्सपेरिमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द फोर्थ वन एंड लास्ट वन. A baby is born, it is a boy or a girl. One mother is there, right? And he is supposed to give a born to a baby, right? तो वो बेबी जो होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा? देन दिस एक्सपेरिमेंट इज आल्सो हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स. वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, दोनों के चांसेस इक्वल है. वी कैन नॉट से दैट द चाइल्ड इन द मदर्स वॉम्ब इज बॉय ओनली और ए गर्ल ओनली, राइट? We cannot say that the child in mother's womb is boy only or girl only. It can be a boy and it can be a girl. दोनों के chances equal है. तो fourth में भी आपको लिखना है yes, this experiment has equally likely outcomes. आया समझ में? Okay, first and second जो मैंने orally बोला वो आपको अपनी नोटबुक में complete करना है. Again, one more time I am saying you. फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने ओरली कंप्लीट किए, वो आपको अपनी फेयर बुक में कंप्लीट करना है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन. बिफोर दैट कंप्लीट फर्स्ट एंड सेकंड वन इन योर नोटबुक. ओके, Okay students, so let us start our third question and then we will discuss our fourth question and we will end our lecture here. From question number 5, the sums are there which we will solve in the next lecture. Okay, question number 1 and 2 we had already discussed it orally, right? आपने अपने बुक में लिख लिया है ना? Okay, let us start now third one. Read the question. What is written here? Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? फुटबॉल गेम जब भी शुरू होता है तब हम कॉइन को क्यों टॉस करते हैं? ताकि हमें पता चले कि भाई किस टीम को जो है वो हमें बॉल देना है. वो डिसाइड करने के लिए हम कॉइन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? Obviously, अब तो आपको उसका आंसर मालूम होना चाहिए. Why? Because the coin have equally likely outcomes. दोनों के चांसेस इक्वल है. हेड और टेल के दोनों के चांसेस इक्वल है. It means ऐसा इसलिए कॉइन जो है वो टॉस किया जाता है, राइट? ताकि कोई भी टीम को ऐसा ना लगे कि भाई हमारे साथ जो है वो नाइंसाफी हुई है. अंडरस्टूड? समझ में आया? तो आपका आंसर क्या होगा? बिकॉज
coin has equally likely outcomes and no team will feel biased. ओके क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, बिकॉज कॉइन हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स, कॉइन के जो दो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली है, एंड नॉट टीम विल फील बायस्ड. बायस्ड इट मींस हम उसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, राइट. नॉट टीम विल फील बायस्ड, समझ में आ रहा है. हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर रहे, बायसिंग नहीं कर रहे कि भाई ये टीम अच्छी है और ये टीम मुझे पसंद है तो उसको मैं बॉल दे देता हूँ, राइट. एज अ रेफरी आई कैन नॉट डू दैट. सो हियर इट इज रिटन दैट नॉट टीम विल फील द बायस्ड. ओके, नेक्स्ट वन. Which of the following cannot be the probability of an event? Four options are given to you, out of which answer cannot be the probability. Probability का कौन सा आंसर नहीं हो सकता है? Okay, so let us discuss. 2/3 आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आएगा 0.666. और 666 कंटिन्यूस चलता जाएगा. -1.5 तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, so that will stay as it is. 15% it means 15 divided by 100. परसेंटेज आपको रिमूव करना है तो डिवाइड बाय 100 करना है. 15 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.15, और यहाँ पर तो दिया ही है 0.7. ओके, सो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी थी इसके पहले की साइड में यहाँ पर एक कंडीशन लिखी थी कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए. 0 हो सकता है एंड 1 भी हो सकता है, बट 1 के आगे और 0 के पहले will never come the answer of probability. Then 0.66 वो 0 और 1 के बीच में है. Okay, so this can be an answer. -1.5. यहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है ना आपको? Here there is a problem. Answer of probability can never be negative. और आपको यही पूछा है that which of the following cannot be the probability of an event. So this is your required answer. ये आंसर नहीं हो सकता. 2/3 can be an answer. 15% it means 0.15 can be your answer, and 0.7 will वो भी जो है वो आंसर पॉसिबल है. एक यही जो एक आंसर है वो पॉसिबल नहीं है. अंडरस्टूड? सो होप सो यू हैड अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर. जो हमने थियरी डिस्कस की, बेस्ड ऑन थियरी हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किए. ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी जो है वो थियरी के बेस्ड ही है, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, अगेन if you are having any doubt you can surely ask to me and complete this question number 3 and 4 in your fair book. Okay, thank you, bye bye.